Hello, good afternoon student. My name is Hiral Rawal. Today's date 19 December 2020. This is our revision lectures, revision video. We start chapter number 14. In previous lecture, we have studied what is a good source of energy, and then we have studied we would then say that a good source of energy would be one which would be do a large amount of work per unit volume of mass, be easily accessible, be easy to store and transport, and perhaps most importantly be economical. Then we studied the activity, we have studied this topic. Okay, now in this video we have studied improvement in the technology for using conventional sources of energy. इसमें सबसे पहले हम बायोमास के बारे में देखेंगे. व्हाट इज़ बायोमास? We mentioned earlier that wood has been used as a fuel for a long time. If we can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. You must also be familiar with the use of cow dung cake as a fuel. Given the large livestock population in India, this can also assure us a steady source of fuel. Since these fuels are plant and animal products, the source of these fuels is said to be biomass. These fuels, however, do not produce much heat on burning, and a lot of smoke is given out when they are burnt. Therefore, technological inputs to improve the efficiency of these fuels are necessary. When wood is burnt in a limited supply of oxygen, water and volatile materials present in it get removed, and charcoal is left behind as the residue. Charcoal burns without flames, is comparatively smokeless, and has a higher heat generation efficiency. Similarly, cow dung, various plant materials like the residue after harvesting the crops, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biomass. Since the starting material is mainly cow dung, it is popularly known as gobar gas. Biomass is produced in a plant as shown in figure 14.4. ये जो है पूरा स्केमेटिक डायग्राम है. The plant has domestic-like structure, but with bricks. A slurry of cow dung and water is made in the mixing tank, from where it is fed into the डाइजेस्टर. द डाइजेस्टर बीच में है, वो डाइजेस्टर है. ओके, यहाँ डायग्राम देख सकते हो स्टूडेंट. ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार आता है 5 मार्क्स का. एक्सप्लेन द बायोमास बायोगैस प्लांट. ओके, सो हमें डायग्राम ड्रॉ करके उसकी जो डिटेल है वो हमें लिखनी है. ओके, आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना. एरो करके आपको लिखना है. सबसे पहले क्या होता है, मिक्सिंग जो टैंक है उसमें जो है वो फीड करा जाता है, डाइजेस्टर जिसको बोलते हैं. द डाइजेस्टर इज़ अ सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज़ नो ऑक्सीजन. Anaerobic microorganisms that do not require oxygen
decompose or break down complex compounds of the cow dung slurry. It takes a few days for the decomposition process to be complete and generate gases like methane, carbon dioxide, hydrogen, and hydrogen sulfide. The biogas is stored in the gas tank above the digester, from which they are drawn through pipes for use. Biogas is an excellent fuel as it contains up to 75% methane. ओके उसमें 75% मीथेन होता है. It burns without smoke, leaves no residue like ash in wood, charcoal and coal burning. Its heating capacity is high. Biogas is also used for lighting. The slurry left behind is removed periodically and used as excellent manure, rich in nitrogen and phosphorus. The large-scale utilization of bio-waste and sewage material provides a safe and efficient method of waste disposal besides supplying energy and manure. Do you think that biomass is a renewable source of energy? बायोमास है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो यस. ओके, यहाँ अनदर एनर्जी की बात की है, विंड एनर्जी. वी सो इन क्लास 9th हाउ अनइक्वल हीटिंग of the land mass and water bodies by solar radiation generates air movement and causes winds to blow. This kinetic energy of the wind can be used to do work. This energy was harnessed by windmills in the past to do mechanical work. For example, in a water lifting pump, the rotatory motion of a windmill is utilized to lift water from a well. Today, wind energy is also used to generate electricity. आज जो है वो wind energy यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए. A windmill essentially consists of a structure similar to a large electric fan that is erected at some height on a rigid support. To generate electricity, the rotatory motion of the windmill is used to turn the turbine of the electric generator. The output of a single windmill is quite small and cannot be used for commercial purposes. Therefore, a number of windmills are erected over a large area, which is known as wind energy farm. ओके, विंड एनर्जी फार्म बहुत सारे बड़े जो ग्राउंड जैसा होता है, ऐसे बहुत सारे विंड मिल्स होते हैं जिसका हम विंड एनर्जी फार्म बोलते हैं. द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल इन अ फार्म is coupled together to get electricity on a commercial scale. Here the diagram of windmill. Denmark is called the country of winds. डेनमार्क जो है वो विंडमिल्स की कंट्री है. More than 25% of their electricity needs are generated through a vast network of windmill. डेनमार्क में जो है बहुत सारे विंडमिल. डेनमार्क को इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स. उसको कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है. ओके, मोर देन 25% of their electricity needs are generated through a vast network windmills. In terms of total output, Germany is the leader, while India is ranked 5th. इंडिया का 5th रैंक आता है in harnessing wind energy for the production of electricity. It is estimated that nearly 45,000 megawatt. Here the unit megawatt is used of electrical power can be generated
if India wind potential is fully exploited. The largest wind energy farm has been established near Kanyakumari in Tamil Nadu and it generates 380 megawatt of electricity. Okay, इतनी जो है वो एनर्जी वो कंज्यूम करता है. Wind energy is an environment friendly and efficient source of renewable energy. It requires no recurring expenses for the production of electricity, but there are many limitations in harnessing wind energy. Firstly, wind energy farms can be established only at those places where wind blows for the greater part of a year. The wind speed should also be higher than 15 km per hour. To maintain the required speed of the turbine, furthermore, there should be some backup facilities like storage cells to take care of the energy needs during a period when there is no wind. Establishment of wind energy farms requires large area of land. For a 1 megawatt generator, the farm needs about 2 hectares of land. 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए 2 हेक्टर्स तो लैंड चाहिए. ओके, अबाउट यहाँ पे लिखा है अबाउट 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड. द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज़ क्वाइट हाई. है ना, ये सब चीज़ें बहुत कॉस्टली होती है. मोरेवर सिंस द टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज टू द वैगरीज ऑफ नेचर्स लाइक रेन, सन, storm and cyclone, they need a high level of maintenance बहुत चाहिए. जो विंड मिल्स एनर्जी के जहाँ फार्म होते हैं, विंड फार्म जो हम बोलते हैं, है ना, यहाँ पे गुजरात की बात करें तो ओखा, लांबा, मांडवी, वेरावल, ये सब जो है वहाँ पे ऐसे विंड फार्म वहाँ पे हैं. तो वो जो बड़ी बड़ी जो विंड पाइप होती है उसको हमें सन से, स्ट्रोम, साइक्लोन, उससे हमें प्रोटेक्ट करना होता है. तो दे नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है. दे वर वेरी कॉस्टली, ये सब बहुत ज़्यादा महंगा होता है. यहाँ पे इनबिल्ट क्वेश्चंस है. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. क्या डिसएडवांटेजेस है. वाई आर वी लुकिंग एट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर अवर कन्वीनियंस. यह 14.3 alternative और non-conventional sources of energy. With technological progress, our demand for energy increases day by day. Our lifestyles are also changing. We use machines to do more and more of our tasks. ज़्यादा से ज़्यादा हम machines यूज़ करते हैं. Our basic requirements are also increasing as industrializations improves our living standards. Here one activity are given. Activity 14.4. Find out from your grandparents or other elders how did they go to school. वो कैसे स्कूल जाते थे. तो पहले के लोग तो बाय वॉकिंग करके ही जाते थे. How did they get water for their daily needs when they were young. जब वो यंग थे तो वो पीने का पानी, डेली नीड्स का पानी कैसे लाते थे. तो हैंडपम्प से लाते थे, है ना, लेक से लाते थे, तालाब से लाते थे. व्हाट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट डिड दे यूज़. क्या एंटरटेनमेंट करते थे. तो वो लोग क्या करते थे, फायर क्रैक्स करके उसके आजू बाजू बैठ जाते थे, नाच गाना होता था. है ना, तब तो कहाँ मोबाइल और टीवी अवेलेबल थे. आउटडोर गेम्स खेलते थे. वैसे कंपेयर द अबव आंसर्स विद हाउ यू डू दिस टास्क नाउ. अभी आज के ज़माने में आपके जो आंसर्स होंगे उसके साथ उसको कंपेयर करिए. आज के ज़माने में आप स्कूल कैसे जाते हो. तो साइकिल लेके जाते हैं, हम वैन में जाते हैं, है ना. बड़े बच्चे तो अपना खुद का व्हीकल्स लेके आते हैं. फिर पीने का पानी तो हमारे डायरेक्ट नल में ही आता है. और आज के ज़माने में हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल एंड टीवी. ओके, इज़ देयर अ डिफरेंस. यस, ऑब्वियसली डिफरेंस है. इफ़ यस, इन विच केस मोर एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इज़ कंज्यूम्ड.
तो कौन से केस में एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है? तो पहले के ज़माने के लोग जो है उसमें ही एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है ना. एज आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्सेस ऑफ एनर्जी. एनर्जी की डिमांड बढ़ी है तो उसके सोर्सेस भी बढ़ने चाहिए, है ना. वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज़ द अवेलेबल और नॉन सोर्सेस ऑफ एनर्जी more efficiently and also look to new sources of energy. Any new source of energy we seek to exploit would need specific devices developed with that source in mind. We shall now look at some of the latest source of energy that we seek to tap and the technology designed to capture and store energy from that source. Here, think it over. Some people say that if we start living as our ancestors, this would conserve energy and our ecosystem. Do you think this idea is feasible? Yes, ऐसा हो सकता है. ओके, बट आज जो है, आज के ज़माने में नेट जो है उसके से ही सारे काम होते हैं, है ना. अभी की हम रिसेंट सिचुएशंस की बात करें तो इन कोविड-19 पीरियड सब ऑनलाइन टीचिंग भी हो गया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो गया है, बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन होने लगी है. ठीक है, तो हम नहीं रह सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. देन टॉपिक 14.3.1 सोलर एनर्जी के बारे में लिखा है. द सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एन enormous amount of energy at the present rate for nearly 5 billion years and will continue radiating at that rate of about 5 billion years more. Only a small part of solar energy reaches the outer layer of the Earth's atmosphere. Nearly half of it is absorbed while passing through the atmosphere and the rest reaches the Earth's surface. India is lucky to receive solar energy for greater part of the year. It is estimated that during a year, India receives the energy equivalent to more than 5,000 trillion kilowatt hour under clear sky conditions. जब क्लाउडलेस होता है, क्लाउड नहीं होते, बिना बादल का हम बात करें, the daily average varies from 4 to 7 kilowatt hour per meter square. The solar energy reaching unit area at outer edge of the Earth's atmospheres exposed perpendicularly to the rays of the sun at the average distance between the sun and the Earth is known as the solar constants. It is estimated to be approximately 1.4 kilojoule per second per square meter, okay, or 1.4 kilowatt per meter square. Here activity 14.5. Take two conical flags and paint one white and the other black. एक को वाइट कलर से आप पेंट करो और दूसरे को ब्लैक कलर से हम पेंट करना है. ओके, फिल बोथ विद वाटर, दोनों में पानी हमें फिलअप करना है. प्लेस द कॉनिकल फ्लैग्स इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर. हाफ एन आवर और 1 आवर हमें कॉनिकल फ्लैग्स को कहाँ पे रखना है? सनलाइट में रखना है. टच द कॉनिकल फ्लैग्स, विच वन इज़ हॉटर, कौन सा पानी हमें गर्म लगेगा? तो जो ऑब्वियसली ब्लैक सरफेस वाला पानी हमें जो है वो गर्म लगेगा. ओके, हॉटर लगेगा कंपेयर टू द वाइट कॉनिकल फ्लैग्स. You could also measure the temperature of the water in the two conical flags with the thermometer. थर्मोमीटर से आपको टेम्परेचर भी मेज़र करना है. कैन यू थिंक ऑफ ways in which this finding could be used in your daily life? तो आपको क्या पता चलता है? ओके, तो ब्लैक सरफेस absorbs more heat as compared to a white or reflecting surface under identical conditions. सोलर कुकर्स, यहाँ पे सोलर कुकर्स का डायग्राम दिया है फिगर 14.6 में. एंड सोलर वाटर हीटर्स यूज दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग. सम सोलर कुकर्स अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर्स टू फोकस द रेज ऑफ द सन. सोलर कुकर्स आर कवर्ड विथ अ ग्लास प्लेट.
Recall what we have learned about the greenhouse effect. Does this explain why a glass plate is used? ओके, ये सोलर कुकर का जो डायग्राम है आप देख सकते हो. ओके, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू.